everybody! Welcome back to Anvi's Creative Corner. Today I'm going to tell you how to make eco-friendly Ganesha with clay or Sadu Mati. As you all know, we celebrate Ganpati Utsav every year and bring Ganesha at our homes and do Visarjan after 10 days. Right? In my previous video, I told you about how to grow plants in your balcony garden. Right? And now you all must be thinking why I am talking about plants in this video. As I told you, eco-friendly Ganesha. What do you mean by eco-friendly? Eco-friendly means nature-friendly. Plants are the part of the nature. But now I'm not going to tell you everything. After making Ganesha idol, I will tell you a wonderful thing about it. Before making Ganesha idol, I will tell you some benefits about it. Number 1. It saves water resources. Number 2. It helps in human health. Number 3. It helps in food poisoning. Number 4. It is home friendly. Number 5. It is easily available and easy to make. Now I'll tell you why I am making eco-friendly Ganesha. Every year, thousands of Ganeshas are made with plaster of Paris, non-degradable material. It cannot dissolve and harm water bodies like fishes. If we take a pledge to make or buy eco-friendly Ganesha, we can save our nature. Hara Jeevan is working in the field of environment for increasing the green cover and reducing waste, even spreading the awareness about it. Individual contribution to the cause can bring remarkable results and brings revolution. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakaishu Sarvada. Let's start. पहले हम पानी और क्ले को मिक्स करेंगे ताकि डो बन जाए. उसके बाद एक फ्लैट बेस बनाएंगे. देखो मैंने एक सर्कल बनाया. आप कोई और भी बना सकते हो. आप पानी को यूज करो ताकि वो जो पैचेस है ना वो हटी जाए, एकदम अच्छे हो जाए. फिर हम उनके लेग्स बनाएंगे, है ना. देखो मैं कितना ओवल शेप्स बना रही हूँ. टू लेग्स है ना अपने पास. उनके भी तो 2 लेग्स होंगे, है ना. अच्छे से अब बनाएंगे हम ओवल शेप्स. 2 देखो. हाँ, मैंने अब जैसा ही कहा था वो पानी से अपन उसके वापस पैचेस हटा देंगे. ओके. नाउ आई एम मेकिंग गणपति बप्पा's belly. Big circle. Yes. Now I am making a big circle. As I said. Now I am placing the belly on the right place. Now I am making the modak for Ganpati Bappa. You all know he loves modak. Yum. I know you also do. Now take some water so the patches are gone, and when you paint it now, it will look good. Now take his hand. Okay. And then
देखो मैंने एक लगा ही दिया है, अब मैं दूसरा बना रही हूँ और अब मैं लगा दूंगी उसको भी, है ना। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है ना। देखो मैं कितना, मुझे बहुत मजा आ रहा था, मुझे लगता है आपको भी आएगा। देखो Now I'm making chest for Ganpati Bappa. Yes. See, now I'm flattening it. Here, you make snake na? Like that I'm doing for chest. Yep. Now I'm using toothpick for carving Ganpati Bappa's fingers. See? Yes. Now I am smoothing the hand. Here I am putting a toothpick for support. Now making the face. देखो मैं मुंह बना रही हूँ। अब उनके पास एक ट्रंक भी होती है, तो मैं ट्रंक भी बनाऊंगी। अब देखते हैं ट्रंक कैसे बनेगी। देखो अब ध्यान से देखो। यस, देखो मैंने अच्छे से, अब देखो मैंने वापस पानी यूज किया है ना, ताकि जब मैं पेंट करूँ तो पैचेस ना दिखे। अब मैं लगा दूंगी फेस। वाओ, अभी से मेरे गणपति बप्पा कितने क्यूट से लगने लगे ना। अब मैं उनके ईयर्स बना रही हूँ। ये थोड़ा टफ काम है, बट मैं कर लूंगी। उनको शेप देना, उनका साइज दोनों सेम होने चाहिए, राइट। तो अब मेरा पहला कान बन गया है। देखो मैं वापस उसको थोड़ा फ्लैट करी हूँ अच्छे से उसको बनाने के लिए। देखो मेरे कान अच्छे लग रहे हैं। वाओ। Now I'm going to make crown of Ganpati Bappa. But first I'm going to make a circle, the back of the crown. Okay? So make a big circle like me. Here. See? Yes. Again I'm using water. Now I'm shaping it. Here. Yes. Now I am placing a toothpick to join it. See? Wow. Great. Yes. Now I'm start making the crown. अब मैं उनके फ्रंट पोर्शन क्राउन का बना रही हूँ। वो एकदम मोदक है ना जैसा, वैसे ही है। देखो अब, हाँ, वैसे जैसे आपने मोदक बनाया था ना मैंने, वैसे। Yes. I'm giving some finishing touches to my crown. Now again I'll place a toothpick under my crown and fix it. See? Wow. See my Ganpati Bappa. Now I'm making the feet to complete the detailing. See, again I'm carving it with a toothpick. Yes, see? Here. Now I've placed it. Yes. I'm carving his legs now. Now his trunk, Ganpati Bappa's eyes, and his tika. Here. अब मैं मुकुट में डिजाइन बना रही हूँ।
बहुत कुछ आप भी डिजाइन्स बना सकते हो, आपका जो मन होए, है ना। देखो अब मैं थोड़ा और सपोर्ट दे रही हूँ पीछे से। अब मैं वाटर से थोड़ा लेके वापस पैचेस हटा रही हूँ थोड़े। यस, देखो अब मैं गणपति बप्पा का फेवरेट मूषक बना रही हूँ। देखो कितना छोटा है। अब मैं उसकी बॉडी बना रही हूँ। देखो कितना टाइम ले रहा है। उसका फेस बनाना है, फिर उसके कान बनाने हैं मुझे। ओ मैं तो भूल गई, टेल भी तो बनानी है। मोदक पे फाइनल टचेस दे रही हूँ। Now my Ganesha is ready, but I need to also do Visarjan. But there's a new way to do Visarjan. I can put eco-friendly Ganesha in any pot, and after some time a plant will grow and my Ganesha will be always with me. So if you like this concept, please give us many likes, subscribe us and share. Bye-bye. Follow us on Instagram and Facebook. Check the description box for more details.